Good evening and welcome. I'm Shashi Dhar, your host, and I welcome you all to the Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And normally this session is on Wednesday, but today is special. So we are having it on a special Thursday. Yes. And the topic for discussion today is divine love and healing. So that's what we're going to look at. We're going to look at the concept of healing. What is healing? And of course, we will see how it is actually connected with the divine love. Yes. So when we talk of healing, let me start the discussion with the topic of healing. When you hear the word healing, what comes to your mind? हम सबको मालूम है हम कभी भी बीमार पड़ते हैं. Cure. Cure. Okay, very good. Yeah. So whenever we fall sick, we are not comfortable. We are having some kind of a disease. We go to the doctor. Doctor gives us some tablets. If it is a simple thing. He gives he gives his prescription, some tablets, we take that, and maybe 3-4 days time or in a week's time, we are okay with the disease, and we are into the situation of an ease. So we are at ease now, and we are free from that disease. So this is called what? This is called medical healing, or I normally say that as chemical healing. तो ये आप अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं, ये हम सबको मालूम है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है. So everybody knows that our body needs healing and gets healed. When you get the right kind of treatment, the body gets healed, right? Now, there are some situations where we experience stress. So we are experiencing stress, mental, emotional stress. बहुत गुस्सा है, anger problem. So then we go to consultants, we go to psychoanalysts, we go to, sometimes if it is too serious, then you go to a psychiatric. If you are undergoing some depression and all, then you are in trouble. Then you go to a psychiatrist and take some help. So this is healing of the mind. Again, you're taking some chemicals, some tablets, and then you're pumping it into your body, hoping that the mind will get okay and get to a condition of ease from disease. So all the healing process that we are normally aware of in the world is moving from a state of dis-ease to a state of ease. Yes or no? This is what our idea of healing is. Okay. So this is what normally is happening at the level of, you can say, body, and at the level of mind. Everybody okay with this? Now, when we talk of, obviously we are talking of Divine Healing Valley, and we are talking of spiritual healing. So obviously we are going to talk of healing at the level of soul. So what does spiritual healing actually mean? Spiritual healing actually means it is a holistic healing. अब सबने सुना होगा holistic healing का मतलब क्या होता है? It takes care of your physical problems, which means the body healing. It takes care of the mental and emotional aspects, which means it takes care of the mind healing. It takes care of your karmas, karmic imprints, which are imprinted into your chit, maybe from this lifetime or maybe from many lifetimes, which you are not even aware of. It is all there in your subconscious mind and the unconscious mind. So these imprints are causing problems in your life, and these have to be healed, or these have to be removed from your chit. That is called the healing of your karmas or the karmic imprints. Yes. So that happens with spiritual healing. And when we talk of spiritual healing, we are talking of impacting all the areas of your life. So it could impact your area of health, it would impact your area of wealth, it could impact your area of relationships, right? So all this healing at this level will happen at the level of, not with tablets, not with chemical healing, but with spiritual healing. So everybody connecting with me till now? If there is any disconnect, you should raise your hand and ask question. Yes, Vishakha ji, go ahead. You raised your hand. You have a question? No, sir. I don't have. No, sir. I don't have question. I said yes. I understand everything. I understood. You agree. Everything. You agree. All right, got it. So good that you agree. So let's acknowledge Vishakha ji for being expressive about her opinion. Okay, good. Now we take a little deeper understanding of spiritual healing. Yes, ready for it? Everybody ready for it? Yeah. So we need to understand who are we as a human being. हम बोलते हैं हम एक जीवा हैं.
जीवा मतलब क्या? वी आर ए ट्रायून बीइंग. Triune being, everybody understands, we exist at 3 levels. Physical level, body. At the, you can say, subtle level, mind. And we all know, शास्त्रों में पढ़ा है, बहुत जगह सुना है, बहुत स्पिरिचुअल गुरुओं से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ. So soul level. So we exist in 3 levels. We are actually a soul and we have a body and we have a mind. अगर मैं ये बोलूँ तो बात सहमत हैं सब लोग? Who are we? Actually we are a soul and we have a body and we have a mind to exist on this planet Earth. And we have come here birth after birth after birth. Obviously, there is a sole purpose to become divine or become one with the divine. That is the process of our evolution. Everybody okay till now? Now, what does spiritual healing actually does? Spiritual healing is actually cleansing of your chit. I've said that before. Cleansing of your chit means what? आपके चित्त में जो भी karmic imprints हैं कई जन्मों से, maybe at the level of mental emotional level, which means maybe a thought, it could be a word, यानी कि थॉट, वर्ड्स और एक्शंस में जो भी आपने कर्म किए हुए हैं उनके इम्प्रिंट्स आपके चित्त में रहेंगे. एंड ये जो इम्प्रिंट्स हैं ये मेंटल ब्लॉक हो सकते हैं. दे कैन कॉज मेंटल ब्लॉक्स, दे कैन कॉज इमोशनल ब्लॉक्स एंड दे कैन कॉज वेरी वेरी सीरियस कार्मिक ब्लॉक्स विच हिंडर योर एक्सपीरियंस ऑफ फुलफिलमेंट इन लाइफ. आज आपकी लाइफ में अगर कोई फुलफिलमेंट नहीं है, अगर आप बीमारियों से ग्रस्त हैं, अगर आपके रिश्तों में खटास है और आप लड़ झगड़ रहे हैं, हो रही है, नॉर्मल भाषा में जैसे बोलते हैं, या आपकी बहुत बहुत स्ट्रगल चल रही है फाइनेंसेस में, बिजनेस में, जॉब में, करियर में, फंड फ्लो में, so there is something which is hindering your fulfillment of life, and this can be traced back to the karmic imprints which of your karmic blocks or the mental blocks or the emotional blocks, maybe of this life or maybe of last life, past lives. So this is the understanding that spiritual healing can cleanse all these. That is why spiritual healing is the answer to all the major issues in your life. Yes. So now I will stop a little bit because there has to be some kind of an understanding or awareness. तो अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं लेने को तैयार हूँ. So anybody who has any question or anybody who has any doubts or anybody who wants to have a discussion, please feel free to do that. So this is the concept of spiritual healing that we are talking of. Why is this important? That's what I'm talking. Okay. So spiritual healing is let me ask you a question. Is it a slow, gradual process or is it a fast 2-minute noodles process? क्या लगता है आपको? Slow, gradual process. It is a very slow, gradual process. Why? Because we are cleansing our chit of many lifetimes, and it is actually compared in one of our literatures I was reading, and it is actually compared to the situation like it is like cleansing of a Pacific Ocean. You can think of, because Pacific Ocean is huge. We know that, right? तो अगर Pacific Ocean के सारे पानी को हमको क्लींस करना है, उसको साफ करना है, हमें गंगा नदी को साफ करने के चक्कर में हम प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं. गवर्नमेंट इज बिजी फॉर 20-25 years फॉर दैट. तो अगर पैसिफिक ओशन को और एक जने ने करना है, you are the only one who is going to do it because it is your Pacific Ocean. Now nobody else can do it. Nobody else has an access to it. So it is a huge job, right? Many lifetimes it will take for your proper sadhana to do that. So spiritual healing is actually a process of sadhana, I would say that. It is a process by which you will be moving forward on the spiritual journey and you will be cleansing your chit and going forward in the spiritual journey. That is what spiritual healing is all about. Yes. So let us have some people share what is the kind of sadhana you think you are doing, or if you are doing, or if you are not doing. अगर आपको लगता है आप नहीं कर रहे हो, then it is the right time, you are at the right place to find out how you can move forward on this journey. और अगर आप कर रहे हो तो I would like you to share something what you have been doing so that everybody can benefit from it and everybody can see how they can move forward on the journey. Right? Everybody okay with me? Yes. So let's have some people share. या तो आप नहीं कर रहे हो और करना चाहते हो,
और कुछ कर रहे हो, कि यही कैटेगरी हो सकती है ना? यस, तो योगेश जी आपने हैंड रेज किया है, प्लीज गो अहेड। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि काफी पुरानी जैसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए टाइम लगता है हीलिंग में ना, तो इसी तरह से आज मनुष्य जन्म का जो एक्चुअली आई बिलोंग्स टू राधा स्वामी मत। तो वहाँ हमें ना, अब जैसे मैं सुबह उठ करके 4 बजे डेली मेडिटेशन करता हूँ। तो उसका प्रोसेस क्या है कि हमारा ना 9 द्वारों के जरिए ये ध्यान बाहर फैला हुआ है, और जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स, या ये कह लो कि हम जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है या खुशियाँ आती है, इसी से ही आती है। बट वो कहते हैं इंसान का चोले का जो मकसद कुछ और था कि वो परमात्मा बन सकता था, या जैसे शिव नेत्र है यहाँ पे, तो वो सभी के अंदर है, ये खाली शिव जी के अंदर नहीं है, हमारे अंदर भी है। तो यस हम यस। क्या है कि एक जो मंत्र हमें मिला है उसका हम उच्चारण करते हैं, बट जब जबान से नहीं करते, मन मन करते हैं। और एक कहते हैं पहले तन स्थिर होगा फिर मन स्थिर होगा, इस तरीके से ये चलता है। तो शुरू में हम क्या है, कोशिश करते हैं कि जैसे सुबह का टाइम अच्छा होता है, फ्रेश होके ना, मुंह हाथ धो के या नहा के जो भी है, हम उसमें बैठते हैं। एक जगह होनी चाहिए, डेली हम उसी जगह से करते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम डाइनिंग टेबल पे जाते हैं, खाने का आता है, रीडिंग बुक या अपने उस पे जाते हैं तो पढ़ने का ख्याल आता है। इसी तरीके से जब मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो उस जगह फिक्स होनी चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, ये कहते हैं ना, एक माहौल बन जाता है कि उसी टाइम जाके हमें ख्याल आएगा कि नहीं अब ये मेरा काम का टाइम हो गया। तो जैसे हम और कामों को प्रायोरिटी देते हैं, इसको ऐसा करना है कि किस कुछ भी हो जाए ये मिस नहीं होना चाहिए। तो ये करते हैं, बस यही है इसमें। फिर क्या है, अभी जैसे पता नहीं कितने 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ भटक के आए हैं, कितने कर्म है हमारे। तो बट वो है, इतना इजी नहीं है, बट फिर भी हम लगे हुए हैं। और बड़े, जिस दिन मिस होता है, अगर वैसे तो होता नहीं है किसी दिन, मतलब हमने 1 घंटा नहीं बैठे, 5 मिनट 10 मिनट कहीं थे, बट वो तो कभी नहीं होता। बट फिर वो लगता है कि समथिंग मिसिंग, आज ना कुछ अच्छा बाकी है। लेकिन वो कहते हैं कि फिर चलते फिरते जब भी मौका मिले करते रहो, ये है हमारा। बहुत बढ़िया योगेश जी, लेट्स एक्नॉलेज योगेश जी फॉर वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयरिंग। यस, दो बातें इन्होंने बहुत अच्छी कही। नंबर वन, मेडिटेशन, एंड आपने कहा सुबह उठ के करते हैं, तो ऑब्वियसली आज मैं अमित जी के साथ यही बात कर रहा था कि ब्रह्म मुहूर्त का सिग्निफिकेंस क्या है। तो 3:30 ऑनवर्ड्स इज द ब्रह्म मुहूर्त एंड इट गोस अप टू 6 AM इन द मॉर्निंग। उस समय आप जो भी मेडिटेशन करेंगे, जो भी साधना करेंगे, तो आपने मेडिटेशन की बात की, वेरी वेरी पावरफुल। That is a sattvic time, and when the energies are absolutely favorable for any kind of sadhana that you do. तो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं और आप मेडिटेशन कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छी बात कही आपने कि मेडिटेशन एक ही जगह पे, बल्कि मैं बोलूंगा एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में फेस करके करते हैं। देन योर माइंड नोस कि यहाँ पे बैठे हैं तो अब मेडिटेशन ही करना है। लाइक यू सेड, इसमें भी एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो खाना ही खाना है। इसमें भी एक चीज और बताते हैं। से अब मैं 45 मिनट कर चुका हूँ, आधा घंटा कर चुका हूँ, तो ध्यान क्या है ना, हमारा स्थिर नहीं है, ये बाहर जाता है। क्योंकि हम दिन भर के जो, या पिछले दिन के या अब के खुशी के और सैड मोमेंट होते हैं, तो उनको ना ये विजुअलाइज करता है बार बार। मतलब क्योंकि ना ये टिकता नहीं है, मन को ही तो टिकाना है हमने यहाँ पे, लेकिन ये नहीं टिकता है। तो हमें क्या है, इसके लिए बराबर कोशिश करते रहना होता है। या अब क्या है, प्रयास बहुत जरूरी है, मन अभ्यास। से लड़ना सबसे बड़ी लड़ाई है। मन सर ही है सर तो सारे मतलब। योगेश जी थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। नहीं, नहीं, ठीक है। आपका पॉइंट समझ में आ गया मुझे, मेडिटेशन और मंत्रा इज योर साधन, करेक्ट। और आप सही टाइम पे, एक ही टाइम पे उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। माइंड भागेगा, माइंड को वापस लाना, माइंड को काबू करने के लिए तो ये सब कर रहे हैं, करेक्ट। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड योगेश जी, थैंक यू वेरी मच। लेट्स एक्नॉलेज योगेश जी फॉर दैट। Yes, anybody else who would like to share? Anybody else who would like to share what kind of sadhana are you doing? एंड अगर आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, तो यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट यू आर बिकमिंग ए बेटर पर्सन, यू आर ओवरकमिंग योर वाइसेस, जो हम बोलते हैं विकार। आप अपने विकारों से मुक्त होते जाएंगे, फ्री होते जाएंगे, और आपकी लाइफ में क्वालिटी डिफरेंस दिखेगा। दैट इज द ऋषि जी, पावर ऑफ मेडिटेशन। यस ऋषि जी, यस, एक बात। मनीषा जी। मैं बचपन से मेरे घर में आर्य समाज को फॉलो करते हैं हम लोग, कोई और किसी चीज को नहीं चाहते थे। और तो बचपन से ही हमें गायत्री मंत्र का, मेरे दादाजी वो गायत्री मंत्र को हमें प्रीच करने के लिए बोलते थे। तो वो एक मेडिटेशन, मुझे नहीं पता मेडिटेशन क्या होता है और मेडिटेशन कैसे होता है,
और मेरे आसपास के लोग भी बहुत मेडिटेशन प्रीच करते हैं, बट मुझे नहीं समझ आता मेडिटेशन। मैं सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, और वो शायद वो 24 घंटे जब खाली होती हूँ तो वो मेरे माइंड में चलता है, और रोज रात को मैं गायत्री मंत्र पढ़ के सोती हूँ। दैट इज मेडिटेशन फॉर मी, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे मेडिटेशन क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे नहीं पता। Got it, Manisha जी. So you have to understand that is not meditation. You are doing मंत्र जाप. आप मंत्र जाप कर रहे हो, और उस मंत्र का अगर सही तरीके से अनुष्ठान करेंगे तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा. ठीक है जी. But you have to understand what you are doing. It is not meditation. It is chanting of the mantra. जी. Correct? So that is what your sadhana is. It is very good. If it is helping you, please go ahead with that. Absolutely fine. Right? Like I say, many people, I tell them, if the only thing if you are doing is if you are listening to a chanting of Om for 15 minutes in a day or 1 hour in a day, or if you can sit in meditation and do a chanting of meditative pose में अगर आप chanting कर सकते हो 1 घंटे की ओम मंत्र की, that is a huge cleansing of चित्त. आपका चित्त बड़ी जल्दी साफ होना शुरू हो जाएगा. Om is the most powerful vibration of the universe, right? And as we move in the forward more in this discussion, I will be sharing something from my life also and what I've been teaching people and the power of Om. So we will be looking at that, and that's very powerful for cleansing your all the karmic imprints of many past lives. Right? Very good. So meditation is one technique. Mantra chanting of mantra is another very powerful technique. And in fact, we have here before also all the people here must have listened to Sanjeev, and Sanjeev has been talking about Vipassana. I myself have gone to Vipassana. So that 10 days of meditation is so powerful. आपके पूरे चित्त को ऐसा लगता है कि पूरा फॉर्मेट कर दिया, जैसे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, आपका पूरा चित्त फॉर्मेट हो जाता है 10 दिन में. It is that kind of an experience. It is so empowering. So definitely meditation is very powerful. Okay. And mantra jap, of course we have to take it to that intensity. उस intensity के साथ करेंगे तब होगा. Otherwise normal मंत्र जाप में इतना पावर अभी किसी साधक में मैंने नहीं देखा है कि सिर्फ मंत्र जाप के चैंटिंग से आप चित्त को साफ कर सकें. बट यस, इट विल हेल्प यू. यू कैन से एट द आउटर लेवल माइंड फोकस हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, नींद अच्छी आ जाएगी. सो दीज आर सम काइंड ऑफ ए फिजिकल, you can say, effects that you will see in your life. So which is also good enough initially. So initial phase में ये काम करता है, but later on you will have to go to some deeper level of mantra chanting and maybe pranayam, yogi pranayam. Many of you are attended that life and breath program, right? So life and breath program में जो हम योगी प्राणायाम सीख रहे हैं, that is very powerful. वो आपके चित्त को साफ कर सकता है. So that is very powerful. Parveen ji is here. I'm sure she will be very happy to share her experience of how powerfully she has been able to free her karmic imprints from the chit and experiencing powerful life. Yes, so that is another one. So meditation and breath work, I would say, is very powerful. And of course combined with chanting of mantra जाप का मंत्र महिमा तो हम जानते ही हैं, मंत्र जाप के महिमा की पावर हम जानते हैं. So all these actually help you to do cleansing of the chitt. Yes. So very good acknowledgement to everybody who shared. Okay, let's have more people share. Let's have more experiences. Parveen ji, anything you would like to share? Aapki journey. Take your time. Actually, yeah. Sure. I have been doing the Shastras from many years. It has gone into my system. But meditation I cannot do, or maybe I'm not inclined to do meditation. जो 1 घंटे की मैं शास्त्रास की स्वामी जी के साथ क्लास अटेंड करती हूँ, that's my meditation. क्योंकि फिर मेरा माइंड कहीं नहीं भटकता. I'm just talking. He's talking about the Atma and I'm with him totally. So, but यही है कि शास्त्र में कहा जाता है कि निधि ध्यासन करो, उसके बारे में मनन करो, जो मैं नहीं करती. That's why my movement of my sadhana is slowing, is not as fast as it should have been. So mananan, nididhyasan, I have to Shravan, Manan, Nididhyasana, that is a power of sadhana. That is how you do that. Very good. That's powerful. नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, but आपको मालूम है ये करना है, that itself awareness is there, that is good enough. I'm supposed to come back and study what he has taught me, and I don't open the book.
but there when he is teaching me, it's gone into my system, and Very it good. has always gone into my system. Very powerful. I can- And of course, you're I doing can a breath work, right? experience it, You're doing a breath work, which is but I very cannot. powerful. Yeah, that's about it. So that is your साधना. बाकी सब तो आपका उसके साथ साथ एड-ऑन्स है. असली आपकी असली साधना तो breath work है. You're doing the yogic pranayams. That is very powerful. And that That is is what everything. is, yeah. So that is very powerful, and that is what is your sadhana. So you should focus on that. आपने वो बताया जो नहीं करते, आपने वो नहीं बताया जो करते हो, हाँ? तो वो जो करते हो ज्यादा important है. अब All वो right, मैं let's करती हूँ, acknowledge. healing करती हूँ. I heal. I love my body, each part, and I'm Yes, doing it. very good. We'll come to that. We'll come to that. Huh? Now you're jumping the gun. And the next point is that only how we are going to actually speed up our journey of sadhana. But first, I want to know what is the kind of sadhana we are doing. Okay, so breath work. So breath work is there, meditation is there, mantra chanting is there. Okay, so we have covered 3 major aspects of sadhana which can help you to heal your body, your mind, and your soul. Yeah, अभी हम soul भी add कर रहे हैं, but actually we will see कि healing सिर्फ body और mind को ही चाहिए, है ना? Yes, right. Anybody else who would like to share? और कोई बताना चाहेंगे? Vijay ji, anything you would like to share from your life and your experience? ऋषिधर जी, मैं सुनता तो सब रहता हूँ लेकिन कुछ करता नहीं हूँ. आप करते हो सर. हैं? आपने वेदांता विजडम सीखा हुआ है. हाँ, आपने वैदिक हीलिंग सीखा सीखा हुआ है. सीखा हुआ है, और थोड़ा मंत्र आपने दिया है वो करता हूँ, और सुबह प्रेयर सुनता हूँ, एफर्मेशंस करता हूँ, और उसके बाद वॉक के लिए निकल जाता हूँ. फिर Okay. तो घंटा भर वॉक करता हूँ, फिर थोड़ी एक्सरसाइजेस करता हूँ. तो आई एम इन दैट फेज. Okay. So you are already said that you are devoting maybe around 2 hours of time already. या 2 घंटे की साधना रोज करते हो और आप बोलते हो मैं कुछ नहीं करता. नहीं, लेकिन मेडिटेशन नहीं करता हूँ. Sir, और मतलब meditation is just okay. Let me clarify a myth. हाँ, सब मेडिटेशन के पीछे पड़ गए हैं. मेडिटेशन तो एक व्हीकल है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का. डोंट गेट स्टक विथ मेडिटेशन. आप कह रहे हो मैं उस गाड़ी में बैठ के नहीं गया. आप बाइक पे गए हो, आप गाड़ी में नहीं बैठे हो, या हो सकता है आप हवाई जहाज में गए हो, बट आप गाड़ी को छोड़ दो. गाड़ी इज नॉट इम्पोर्टेंट. आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है. जैसे भी पहुंच, पैदल जाओ ना, किसने रोका है? Yes, Right? this is Meditation the way. is a vehicle. You are on a journey. Meditation is a vehicle which will help you to reach the destination. I am saying yogic pranayam will also help you to move to the same destination in a different way, in a different speed. Right? Affirmation. आपने कहा affirmation कर रहे हो. आप हीलिंग के टेक्निक सीख रहे हो. आपको ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है. अभी वो वेदांता विजडम आपने अटेंड किया हुआ है मेरा प्रोग्राम. करेक्ट? We have together, I know your sharings which were in the program has made a huge difference to all the participants. So you are aware of Vedic healing, you are aware of Vedanta wisdom, you are doing the affirmations, you are being with nature for 1 hour with no thought in your mind by walking. These are not simple activities. This is sadhana. This is your sadhana. Your body is tuned for that. हर एक की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आपको कोई ना कोई कॉलिंग आएगी. उस कॉलिंग को पहचानो और उसको धन्यवाद करो और उसके सहारे आगे बढ़ो. दिस इज योर व्हीकल, राइट? All of us have been given a vehicle of this body to have your spiritual experiences. And then for this body to reach that destination, there are some sadhana that you have to pick up, and that you will pick up as per your frequency. When I'm saying frequency, we are all energy, right? Soul means what? What is the definition of energy? हाँ, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ते हैं पहले. फिजिक्स में एनर्जी को क्या बताया गया है? एनर्जी इज neither be created nor destroyed. Nor be destroyed, yes. It can only be changed from one form to the other, right? आत्मा के बारे में क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल ज्ञान क्या है आत्मा के बारे में? आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है. आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है. सेम थिंग. क्या गलत बोला है? क्या अलग बोला है? दोनों सेम है. तो सोल एट द लेवल इज एनर्जी, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. और जो चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है वो अलग अलग फॉर्म में आ रही है. Do you need any further proof of reincarnation? Do you need any further proof of rebirth? बहुत लोग बोलते हैं मैं नहीं मानता, ये मेरा पिछला जन्म था, अगला जन्म था, यही जन्म है मेरा. You are energy, right? Energy cannot be destroyed.
तो आप पहले भी थे और बाद में भी होंगे, इस फॉर्म में नहीं होंगे, विच इज ओके. Clear? So that explains the myth, that rather breaks the myth of कि reincarnation का proof दो. Reincarnation का proof आप हो. You are the proof. You are energy, and energy cannot be destroyed. It can only be changed from one form to another. अब 100 साल पहले विजय जी नहीं थे, मैं 100 साल पहले शशिधर नहीं था, योगेश जी नहीं थे, राइट? और अगले 100 साल बाद भी हम कुछ और होंगे, पर होंगे जरूर, because energy can never be destroyed. So you are immortal, right? You are immortal, and that is why we can heal, because we are part of the divine. इसीलिए हम अपने आप को हील कर पा रहे हैं. सोल पावर के साथ ही हीलिंग होती है. That is why we are able to use our awareness, use our consciousness, and heal our body and mind, because we have that power. We are part of that divine only. Yes or no? आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इतना तो मानते ही हैं. चलो वेदांता का ज्ञान नहीं देता अभी मैं. वेदांता के ज्ञान में तो मैं बोलूंगा आप ही परमात्मा हो, तो वो थोड़ा सा हेवी हो जाएगा. हाँ, तो वो नहीं बोल रहा. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आत्मा परमात्मा का ही एक अंश हो आत्मा, तो आप में वो सारी क्वालिटीज हैं. इफ गॉड इज इनफाइनाइट, देन ए फ्रैक्शन ऑफ इनफाइनाइट इज आल्सो इनफाइनाइट. यस और नो? मैथमेटिक्स, साइंस की बात हो रही है. वन फ्रैक्शन ऑफ इनफाइनाइट इज आल्सो इनफाइनाइट. तो अगर परमात्मा इनफाइनाइट है तो आत्मा भी इनफाइनाइट है, तो आप इनफाइनाइट हो. आप इनफाइनाइट हो तो आप इस जन्म में ही रह के कैसे मर सकते हो? आप पहले भी थे और अब बाद में फिर आओगे. करेक्ट? And since you are immortal, you are divine, you have the power to heal. So basically, everybody can heal by using the right techniques and the right understanding. You can heal your body and mind. Not only you can heal your body and mind, if you become a qualified healer by learning the healing techniques. Okay, now for example, I will tell you, when I started my journey, I started off as a Reiki master. I started learning pranic healing, Reiki healing, and then I moved on to all modalities of healing, karmic healing, consciousness healing. Later on, I stopped at Vedic healing and Vedanta wisdom, and now I practice that and I teach that, because that is the highest level of healing which I experienced in my life. It changed my life completely. मेरा consciousness level इतना बढ़ गया कि मैंने कहा मेरे को यही करना है और यही सिखाना है लोगों को. And this is what I've been doing for the last 5 years. And the result is today that I'm sitting here and talking to all of you, basically because that has been my journey. मेरा passion है ये. Correct? So when you heal yourself, you get that power, and then you can heal not only yourself but all the people in your life. And then people recognize you as a healer. Correct? Now a question from me to all of you. How many of you know about healers who heal? जो healers बोलते हैं कि मैं healing करता हूँ. कितने लोग ये सुने हैं, ये जानते हैं ऐसे लोगों को जो बोलते हैं मैंने heal किया, मैंने 1000 लोगों को heal किया, 10,000 लोगों को heal किया. तो कौन heal कर सकता है? सबसे पहले कौन heal कर सकता है? Divine. Only divine can heal. That is the first understanding you have to understand. Any healing can be done only by a divine. Yes. Fake healing होती है. Yeah. अस्मिता से फेक हीलिंग होती है. हाँ, फेक हीलिंग क्यों होती है इसी का जवाब दे रहा हूं मैं जी. तो ध्यान से सुनिए. हीलिंग सिर्फ डिवाइन ही कर सकता है. परमात्मा के पास ही वो पावर है कि किसी को हील करे. Nobody else can heal. Why are we capable of doing that? Because we are part of the divine. But for you to become a healer or for me to become a healer, what is important? I have to surrender to that divine. आत्मा को परमात्मा के साथ एक होना पड़ेगा, तभी वो हीलिंग कर पाएगा. अगर वो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ नहीं है तो वो हीलिंग नहीं कर सकता है. इसलिए वो फेक हीलर लगता है. वो अपनी कोशिश पूरी कर रहा होगा लेकिन उसका कनेक्शन डिवाइन के साथ नहीं है. That is why the healing does not happen, and the healee to whom the healing energy is being sent does not experience any changes. और जब किसी में ये ईगो आ जाएगा कि मैं लोगों को हील कर रहा हूं तो हीलिंग और बर्बाद हो जाएगी. Because ego has to be surrendered to the divine.
only then the healer will be in a position to channelize that healing energy and send it to the Healy, and the Healy will experience that magic and miracle in his life. Am my point clear? Is my point clear to everybody? Human being doesn't have any power to heal. Vijay ji, aa raha hu, ek second. Human being has no power to heal unless that human being has surrendered his ego to the divine. Healing is only done at the level of the divine. So all the healings will happen with divine grace and blessings. When the ego of the healer has surrendered to the divine, in short, the healer is connected fully with the divine. Yes? So that is the first very bold statement I am making. Let us have some sharing. Okay, Gunjan ji, एक second wait करिए. मैं पहले विजय जी से पूछ लूं. He raised his hand first. Yes, विजय जी. मैं ये कहना चाह रहा था शशिधर जी, पॉइंट नोटेड एट द सेम टाइम, जो जिसको हीलिंग दी जा रही है, जिस सोल को, उसको भी रिसेप्टिव होना जरूरी है. वो मैं आ रहा हूँ सर. मेरा अभी दूसरा हाथ आया नहीं. ओके. अभी मैंने पहला हाथ बताया. हीलर कौन है? अभी हीलिंग कौन है उसके बारे में भी बताऊंगा. ठीक है. ओके. क्योंकि एज ए हीलर आई कैन सेंड हीलिंग टू मे बी 500 पीपल इन दिस वर्ल्ड. ओके, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज डिवाइन के पास इनफाइनाइट पावर्स हैं. इफ आई कनेक्ट विद द डिवाइन आई हैव द पावर टू हील 500 पीपल. जस्ट मैं अप्रोक्सीमेट नंबर बता रहा हूँ. क्या सारे 500 लोगों को एक ही इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हीलिंग इज नेवर गिवन, इट इज टेकन. रिसीवर इज जस्ट लाइक सेइंग, अगर मैं आपके घर में कुरियर भेजूं और आप घर पे ही नहीं हो, या आप बोलते हो कि नहीं मेरे को कुरियर नहीं चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा ना. आपको पता ही नहीं है कि मैंने कुरियर भेजा, आप चले गए कहीं पे, तो आपको नहीं मिलेगा. इसीलिए हीली को पहले रिसेप्टिव होना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एंड एक एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है, तभी वो हीली रिसीव करेगा एनर्जी को, विच इज द पॉइंट दैट यू मेड. ओके, सो यू हैव फास्ट फॉरवर्डेड मी टू address that point. So thank you very much. So I will explain more of this, but first let me hear what Gunjan ji has to say. Gunjan ji, yes, go ahead. So can you explain me what is the meaning of ego coming in between? Okay. Like Ego coming in between. Very good question. Very good question. Asmita ji said that fake healers हैं, ego बीच में आपने कहा आती है. So I want to know that. Okay. So बेसिकली मैंने उनको जवाब ये दिया था, फेक हीलिंग का मतलब ये है कि अगर वो हीलर ईगो में आ जाएगा तो वो डिवाइन से कनेक्टेड नहीं होगा. पहली बात है, क्योंकि हमारे अंदर ईगो भी है, हमारे अंदर डिवाइन भी है. लाइक आई ऑलवेज से, देयर इज अ व्हाइट डॉग, देयर इज अ ब्लैक डॉग. Okay, either you operate from a white dog or you operate from a black dog. Black dog means you are operating from the level of ego. White dog means you are surrendered your... What kind of egos, sir? Any kind of ego. Any kind of ego. So for example, I will tell you, मैंने healing की और उसको उसकी सफरिंग और मिजरी खत्म हो गई. So I am a great healer. ठीक है, तो my chest has become 56 inches now. 56 इंच की सीना लेके मैं चौड़ा हो सकता हूँ. बोल सकता हूँ मैं दुनिया का सबसे बढ़िया हीलर हूँ, मेरे से बढ़िया हीलर कोई नहीं है. ये ईगो है ना, ये ईगो है. अगली बार कुछ नहीं होगा और हीलिंग पीछे पड़ जाएंगे. क्यों? ईगो में हीलिंग नहीं होती है. Whatever you are declaring to the universe knows what you are doing. Okay, so this is also true in many cases. I have seen that in medical healing, if a doctor, when he does a surgeon, so एक सर्जन है, हार्ट सर्जरी करता है, परफेक्ट सर्जरी कर रहा है, एंड इफ यू आस्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट डॉक्टर, हाउ ही सेव्ड हिज लाइफ, क्या बोलता है? मैंने तो अपना काम किया, बचाने वाला तो भगवान है. प्राण शक्ति अगर है उसमें तभी वो बचेगा ना. करेक्ट. डॉक्टर ने सब कुछ सही किया, ऑपरेशन एब्सोल्युटली फाइन, द पेशेंट कैन डाई, राइट? Yes, patient can die because he is doing only the knowledge and the expertise of doing a surgery. 10% है, 90% is with the divine. So if he surrenders to the divine, he increases that 90% more, and his chances of healing that patient is increased 9 times. You have to understand that instead of 10%, if you are operating from ego, you will get only 10% benefit. When the ego surrenders to the divine, you get 100% benefit. So Gunjan ji, that is a crisp answer to your question. I have experienced it myself because when I was on ventilator, तो doctors ने यही कहा था, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी भगवान भरोसे.
So I have this experience in my life, so I Absolutely. can totally correlate with it. See, whatever happens in the body is doctors are basically क्या करेंगे? अगर कोई होता भी है, ट्यूमर होता है, क्या करते हैं? वो ट्यूब काटते हैं, ट्यूमर को निकाल देते हैं और दोबारा स्टिच करके रख देते हैं. बॉडी को हील करना उनके बस की नहीं है. They prepare a condition in which the body heals itself. Why? Because the Atma is there. Yeah. Because the Prana Shakti is there. It is the Prana Shakti which heals. Because the soul is still attached to the body. Soul निकल जाएगा, प्राणा शक्ति बंद हो गई. दुनिया के सारे हार्ट सर्जन्स को बुला लो, नहीं बचा पाएंगे. So you have to understand, knowledge and skill will contribute only to 10%. Surrendering to divinity is the 90% job, which is the most toughest job. That is why fake healers are, हाँ, अभी जो टर्म सुनाया किसने? अस्मिता जी ने सुना. फेक हीलर मतलब वो ईगो से ऑपरेट करे. उसकी इंटेंशन गलत नहीं होगी, पर थोड़ा घमंड है, मैं हीलर हूँ. शुरू में हमको भी था, मैं रेकी मास्टर हूँ. And then I used to do very ordinary healings initially. 97-98 की बात करूँ. Slowly समझ में आ गया. When I saw my master saying that, like, I am just a channel, I don't do anything. You created so many healers, आप सबको healing सिखा रहे हो, आप इतने बड़े healer हो, आप कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया. नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, डिवाइन कर रहा है जो कर रहा है. That is when, after interacting with my master for more than 5 years, 7 years, I understood this. तब तक ईगो में थे, मैं तेरी हीलिंग करूंगा, मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. अरे, you understand the kind of ego that comes up. So you have to actually beware. ईगो ट्रिगर हो गया तो हीलिंग नहीं होगी. So this is as far as the healer is concerned. Now when we come to the healing, बहुत सारे हीली आते हैं. हाँ, हीलर के पास, अब मैं फेक हीलर की बात नहीं कर रहा, जेन्युइन हीलर की बात कर रहा हूँ. हाँ, जेन्युइन हीलर के पास आए, हीलर ने उनको बताया कि ये होगा, मैं हीलिंग करूंगा. जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं हीलिंग साइकिल इज ऑफ 21 days. तो 3 से 5 साइकिल नॉर्मली, दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज. 3 हीलिंग साइकिल्स या 5 हीलिंग साइकिल्स या समटाइम वेरी सीरियस केसेस में 6 या 7 हीलिंग साइकिल्स होती हैं, which is mostly in terms of paralysis cases और कैंसर, ऐसे बहुत ही सीरियस केसेस होते हैं, तब ज्यादा साइकिल्स लगते हैं. नॉर्मली 3 to 5 हीलिंग साइकिल्स आर सफिशिएंट फॉर एनी क्राइसिस इन हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप. अब उसके बाद हो गए थे, एक हीलिंग हो गई सर, एक हीलिंग साइकिल हो गई, कोई फर्क नहीं है. तो so I have to be patient with them. Okay, ठीक है, got it. बट आप ये देखिए क्या फर्क आप चाहते थे. नहीं, मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई. बीमारी ठीक नहीं हुई, आपका ओवरऑल नींद बेटर हुई. हाँ, नींद थोड़ी सी बेटर हुई है. माइंड थोड़ा शांत हुआ. हाँ, माइंड थोड़ा शांत हुआ. मैं कहा पहले हीलिंग साइकिल में क्या चाहते हो? You have to understand, it is, you have to have patience, you have to have faith in the divine. There has to be patience, and then it will happen, because you have to understand the healing energy is the divine energy and it is going to heal. It is definitely going to heal. आप faith तो रखो. डाउट के साथ आए हो, एक्सपेरिमेंट करने आए हो, तो हीलिंग नहीं होगी. You cannot have an experiment with God. Correct? You have to have faith in the God. ये डिवाइन एनर्जी की बात है, डिवाइन हीलिंग की बात हो रही है. इफ यू हैव द फेथ, you will get healed like this. In this moment you can get healed. How many of you have experienced that? Magical healing. I experienced that at least in the last 5 years. I can say I've experienced that every day in my life. Vishakha ji is saying, I missed the last minute from the session. My dad was calling, so I had to receive. Okay, Vishakha ji, no problem. You will get the recording, so you can watch it all over again. Okay, so I don't know what you missed. In case you have any question, you can ask the question. I will answer it. Right. So we were just distinguishing what is spiritual healing, how the healer should be when he is doing the healing, and how the healee should be to get the maximum benefit of the healing. So you have to understand, first of all, don't doubt the process of healing. It is the divine who is healing. So don't question the process of divinity. Don't question the process of healing. Have full faith in the divine, and when you have the faith, only then come for the healing, and you will get actually magic and miracles in your life. Correct? So that is my experience, and that is what I wanted to share. So let's have more people share, more people ask question. Yes. Okay. Thank you, Vishakha ji. Yeah. Yes. Anybody else who would like to share your experience of bad healer, fake healer, or magical healing? जो भी हो, कोई भी experience share कर सकते हो. And
meanwhile when you are thinking of what you need to share, let me ask you a question. बहुत बार सुना हुआ है टाइम इज अ बिग हीलर. कितने लोगों ने सुना है टाइम इज अ बिग हीलर? How many of you believe that? How many of you agree with that? Time is a big healer. Show me your hand. Yeah, time is a big healer. Yogesh says yes. विजय जी सोच रहे हैं क्या बोलूं? 50-50. 50-50. 50-50. Okay. No, simple. बहुत बार सुना टाइम इज ए ग्रेट हीलर, राइट? या तो टाइम इज ए ग्रेट हीलर. कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? मैं मानता था, बहुत मानता था. सर 50-50. टाइम अब भी को मानता हूँ. टाइम को कैसे डिफाइन करो, टाइम को कैसे डिफाइन करो, वो भी क्वेश्चन है. नहीं, टाइम मीन्स पैसेज ऑफ टाइम. सिंपल. करेक्ट. Passage of time, 15 seconds can be long time for somebody. Okay. You take a normal time. Okay. Yeah. Say 1 month. 1 month. Maybe. Okay. सबसे ज्यादा ग्रीफ वाला सिचुएशन क्या मानते हैं हम? किसी की कोई some soul has passed away. Okay. तो 13 दिन का शोक मनाते हैं. तो आप 1 महीने का टाइम ले लो, चलो ठीक है जी. तो 1 महीने के बाद टाइम हील्स. टाइम इज ए हीलर. 1 महीने के बाद, चलो 6 महीने के बाद सब कुछ हील हो जाएगा. 1 साल के बाद तो परफेक्टली सब कुछ हील हो जाना चाहिए ना. होता है? No. So you have to understand this is a myth. Myth means it is not the perfect understanding, it is a partial understanding. Time is a good healer for physical injury. आपको चोट लग गई है, फिजिकल इंजरी के लिए टाइम इज ए गुड हीलर. 3 दिन छोड़ दो खुले में, अपने आप ठीक हो जाएगा. जानवरों को देखा है आपने? किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते. ओके. जो पालतू हैं उनको हम लेके जाते हैं, जो डोमेस्टिकेटेड हैं उनको हम लेके जाते हैं. नॉर्मली क्या होता है, सड़क पार कर रहे हैं, किसी बाइक ने मार दिया, चोट लगती है उनको. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स यू वुड सी, कैट एंड डॉग्स, दे जस्ट लिक देयर वुंड्स. सलाइवा हैज अ ग्रेट हीलिंग पावर, बाय द वे. अब सलाइवा हैज अ ग्रेट हीलिंग पावर. छोटी छोटी चोट लगती है, फटाफट हम उंगली कट जाती है, क्या करते हैं? मुंह में डाल के सलाइवा टच होता है, अपने आप हील हो जाता है थोड़ी देर में. वो छोटी छोटी चीजें हम वैसे ही कर लेते हैं, राइट? आपके हाथ में चोट लग गई, चाकू लग गया या कुछ लग गया, क्या करते हो आप? यहाँ से आप थोड़ा सा बरोलिन लगा लोगे और क्या होता? 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, नई स्किन आ जाती है. फिजिकल इंजरी है, so time will heal. Okay. But mental pain, emotional stress, किसी को माफ नहीं कर पाए आप, 1 महीने बाद माफ कर लोगे, 1 साल बाद माफ कर लोगे, 1 साल बाद और गुस्से में होते हैं, इसको तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा. So time doesn't heal. Time doesn't heal the mental blocks, the emotional blocks and the karmic blocks. वरना लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कराने आते. Where is my friend mind coach Sanjeev? Yes, Sanjeev is there, right? He would vouch. 5 लाइफ टाइम पहले के भी लोग दर्द पकड़ के बैठे हुए हैं, इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, हिप्नोथेरेपी में आते हैं, नहीं छोड़ा जाता है. अभी तो याद है. सर एक चीज पूछनी थी. 1 मिनट आ रहा हूँ. लेट मी फिनिश द सेंटेंस. ओके. सो you have to understand, for physical injury you can say time is a good healer. For mental pain, emotional pain, karmic pain, time does not heal. You have to heal and you can take as much time as you want. अब कितने जन्म लेना है लो ना. God is very करुणा के सागर है, वो बहुत कंपैशन है भगवान. आपको बहुत मौके देंगे, बहुत सारी लाइफ टाइम्स देंगे. अपने आप को माफ करो, औरों को माफ करो. जैसे ही माफ करोगे हील हो जाओगे. ये है गुरु मंत्र. जब तक माफ नहीं करोगे हील नहीं होंगे, जब तक लेट गो नहीं करोगे हील नहीं होंगे. So this is the lesson you need to learn. Unless you know how to heal, you will not heal. कई जन्मों तक का हिसाब किताब लेके बैठे हुए. And then you need some very strong methods of sadhana. That is what we have discussed. Maybe meditation, maybe yogi pranayama, maybe spiritual healing from a genuine divine healer. Okay, so that will help you to move forward in life, right? Okay, let's have more sharings. Okay, Gunjan ji. Okay, पहले गुंजन जी के पास आता हूँ, उसके बाद मनीषा जी आपके पास आओ. Yep. Yes. Sir, I have an experience of a fake healer.
मैंने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था एंड मुझे 9 बार करवाना पड़ा क्योंकि मुझे मैं हील ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा 9 सेशंस करवा लिए, अभी तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लाइक यू नो नथिंग, आई कुडंट गेट एनीथिंग, बट देन आई मेट DHV. वेलकम वेलकम। Then I Yes, met then I met Amit, and then I met you, and now I am healed, yes, and totally healed. I'm sure as soon as Sanjeev is a bit free, I will ask him to expand on this when you talk Yes, of yes, past life regression. So that is something that he would love to speak on. So I will reserve that comment for him. I will not venture into past life regression now because that is his forte. yes. वो बताएंगे उसके बारे में. But yes, Okay. thank you Gunjan ji for sharing that. And by the way, let's not say fake healer. Let us say egoistic Yeah, healer. egoistic healer. क्योंकि फेक Yeah. हीलर कोई जानबूझ के नहीं करता है, उनके बस की नहीं है, उनको Yes. पता नहीं है, अज्ञानी है। जैसे पिछली बार बोला था ना संजीव ने, या तो वो अज्ञानी है या रोगी है। तो वो हीलर अज्ञानी है और वो हीलर रोगी है, उसको कुछ नहीं हो सकता। तो उसको डिवाइन बनना पड़ेगा। जब वो डिवाइन बनेगा तभी हीलिंग होगी। Yeah. डिवाइन बनेगा मतलब ये नहीं अवतार बन जाए। डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, प्रोफाउंड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। contribution is should be the purpose, not money making, right? See, money will come as a byproduct. Your main focus is that I should be one with the divine. But लोग उल्टा करते हैं। हाँ, destination should be God and money should be the byproduct. They take as money should be the destination and God is a byproduct. तो भगवान को साधन बना लेते हैं, हीलिंग को साधन बना लेते हैं, माध्यम बना लेते हैं अपने डेस्टिनेशन मनी तक जाने के लिए। वो गड़बड़ है। वो फिर इगोइस्टिक हीलर या फेक हीलर कहलाएगा, राइट? So you should know focus is on contribution to the other soul by connecting with the divine. Then you are on the right path and the money will flow. And this I'm talking from my personal experience. Right? Right. Thank you, Gunjan ji, for sharing that. Yes, Manisha ji, you wanted to share something? Please go ahead. नो, शेयर करने की बात नहीं थी, पर एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था। हाँ जी, जैसे पूछिए। आपने बोला कि पास लाइफ का कुछ ऐसा है जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो पास्ट रिग्रेशन करके उसको हील कर सकते हैं। तो अगर किसी बंदे से कोई भी प्रॉब्लम है या जो भी है उसको आप माफ नहीं कर पाए हैं और सब आपने 5 जन्म या 10 जन्म भी ले लिए हैं, तो अगर इतना डिफिकल्ट है माफ करना, तो पास्ट रिग्रेशन से कैसे माफ कर पाएंगे? See, you are not able to do that because you are working on yours. आप खुद ही अपने ऊपर काम कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो। अब कई लोग हैं जो नहीं माफ कर पाते हैं, है ना? अभी भी कुछ लोग होंगे जो, मैं 30 साल पहले 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, दोनों भाई अभी तक पकड़ के बैठे हुए हैं, करेक्ट? और अगर जी, इस जन्म में नहीं छोड़ा तो अगले जन्म में वो कुछ और बन के पैदा होंगे और एक दूसरे के साथ बहुत खुंदक खा रहे होंगे। दे वोंट नो where they are fighting with each other because this reason is not known to them. इसीलिए बोलते हैं जब तक आपको मालूम है इस जन्म में क्या किया, फटाफट माफ करते जाओ लोगों को। जितनी जल्दी माफ कर दोगे अगली बार PLR नहीं करना पड़ेगा अगली बार हीलर को ढूंढते हुए नहीं आना पड़ेगा। जितने अकाउंट क्लोज कर सकते हो अकाउंट क्लोज करो। दैट इज द वे टू लिव लाइफ। बट माफ करना इतना आसान नहीं होता ना। आसान होता है? क्यों नहीं होता? लेट गो करो ना। नहीं होता तो यू विल हैव टू कम टू ए हीलर, हील दैट। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो अभी? क्योंकि एक सेकंड, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो अभी? सोचिए। नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत किया है तो माफ नहीं कर पा इस रहे जन्म हैं। में किया है, इसी हाँ, जन्म में किया है। क्योंकि हम तो इसी जन्म का जानते हैं ना, पिछला तो हाँ, हमें नहीं पता। तो पिछला जन्म मैंने अभी बताया था ना, पहले आपने शायद सेशन में अगर पहले आए थे तो आप पहले भी थे, अभी भी हो और आगे भी रहोगे। हाँ यस जी, और नो? जी। हाँ, तो इस जन्म में जो आपको मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। असली गिफ्ट तो आप पिछले जन्म में उसको दे चुके हो। जो अमित जी ने पिछली बार बोला था, पिछले जी, जन्म में आपने उसकी भैंस खोली थी, तो वो इस बार आपकी भैंस खोल रहे हैं नहीं तो इसका ये कोई फुल प्रूफ तो नहीं है ना। हो सकता है ये हम पहले इसी जन्म में हम you अपना कार्मिक अकाउंट प्रूव्स बना। है, साइंटिफिक प्रूव्स है। there Proof will है। be proof. See, you need to It's understand whatever is happening in your life right now is your own creation, is your own attraction. ये scientifically proven है। This is a universal law. Universal law क्या है? You attract people, situation and things in your life. All the life situations in your life are being created by you only. Correct? Your financial mess is created by you. Your relationship mess is created by you. You are not able to forgive somebody. This is also created by you.
और क्यों माफ नहीं कर पा रहे हो मैं इसीलिए बता रहा हूँ। इस जन्म में अगर कुछ किया है तो यू नो द रीजन, यू कैन सॉर्ट इट आउट। कई बार पिछले जन्म का पेंडिंग चल रहा होता है, उसके ऊपर आज का आ गया है, तो आप चाहते हुए भी माफ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पिछले जन्म से चला हुआ आ रहा है वो गुस्से, उसको देखते ही आपको गुस्सा बढ़ जाता है। हाँ, इस लाइक जैसे क्या बोलते हैं, बुल फाइटिंग में लाल कपड़ा दिखा दिया, अब वो नहीं रुक सकता, वो मारने आएगा आपको। गेट माई पॉइंट? सो जी यू डोंट नो व्हाई यू आर गेटिंग एंग्री विद सम पीपल। उनकी शक्ल देखते ही, उनका नाम सुनते ही आप चिढ़ जाते हो, आपको मारने का मन करता है, होता है, गुस्सा जी आता है। जी तो आप माफ नहीं कर पा रहे हो इसीलिए क्योंकि बहुत पेंडिंग चल रहा है। So you should know the art of forgiving, let go, which you will get by your spiritual journey, by the way. ये आपकी साधना से क्लियर होगा, राइट? तो साधना का मतलब क्या है? अगेन आई रिपीट दैट, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, मंत्र चैंटिंग, these are the ways which will help you to let go. और कोई शॉर्टकट नहीं है। जी Or you have to find a spiritual healer and go for spiritual healing. Heal your karmas, heal your body, heal your mind. Whatever is happening in your body is happening because of the mind, and whatever is happening in the mind is because of your karmas which you have done in the past life. सिंपल है। यूनिवर्सल लॉस को समझ जाओगे तो लाइफ बहुत आसान है, बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज अ प्रॉब्लम। लाइफ बहुत सिंपल है, राइट? यस। सो मनीषा जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन और यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन? नहीं Okay, थैंक so यू think about it. Think about it. You can come up with a question a bit later. Meanwhile, let me go to somebody else. Okay, so Sanjeev, I guess whenever you are okay, you will switch on your. I am on the way. I'm driving. So my only point, what I want to share, Shashi, Yes. I've been listening, is that two things very clear. One, it is always the ownership of the receiver. That's very clear. Receive करोगे तो receiving होएगी, वरना healing कहाँ से होएगी, right? इसका part B है कि grateful होना भी बहुत जरूरी है, because once you receive and you are not grateful, you miss it again. You'll go back. Very, very clear. And the third part, which Shashi, very valid and very interesting, which we have always been talking, कि there is no one who can heal as a human being. We have to be very clear. Somebody who says, I am a healer, I have healed someone, I have done this thing, I have done that thing, practically it's just a ego satisfaction. Genuinely इसके अलावा कुछ नहीं है। और अमित जी बोलते हैं भैया भैंस खोल दिया, जो भी खोल दिया वो तो अमित जी का है ही। And we'll talk on that subject some other day. भैंस है या गाय है, क्या चीज है? But again, Shashi, that's very relevant. Healing is healing, and healing can only be divine. How can healing be human? Yes. That's what. Yes. Absolutely perfect. Thank you, Sanjeev, for endorsing the view. And if you're free towards the end, we will talk a little bit about maybe PLR, if you're okay. PLR. Otherwise, we will Yes. talk it maybe in the some other session. That's fine. Okay. He's driving, so whenever he's free, he will do that. Okay. Yeah. Okay, let's have some more people share. Anybody else who has any question? Vijay ji, अच्छा आप यहाँ से वहाँ चले गए. That's fine. Okay, I was looking for you guys. Right. Anybody else? Yogesh ji, who else joined? Let me just check. Zoom user अभी भी है. Jyoti ji, Baljinder ji. Then we have Sushil Jain ji. Welcome. Kavalinder ji. Okay. तो किसी को कोई सवाल हो जो हमने आज डिस्कस किया, इसके बारे में कुछ बोलना चाहें, क्योंकि 10 बज गए हैं. So we will be closing the session. Any views you have on spiritual healing, and then I will close it with the divine. क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अभी divine connection जरूरी है, तो you have to understand that divine connection comes with what? Divine connection comes with what? Divine love. क्योंकि healing energy is always considered to be a unconditional love energy, and unconditional energy can come only from the unconditional love can come only from the divine. जैसे ही नेम एंड फॉर्म में आ रहा हूँ 2 मिनट, जैसे ही नेम एंड फॉर्म में आएगा हम राग द्वेष में फंस जाएंगे, क्योंकि माइंड इन्वॉल्व हो जाएगा. जैसे ही नाम, किसी का भी नाम बोलते हैं ना, जैसे बोल दिया अभी रोहित शर्मा या विराट कोहली, जैसे ही नाम बोला क्या हुआ? नाम आया दिमाग में, एक
इमेज बनी, कोई ना कोई उसमें एक फीलिंग आ गई, इमोशन आ गया, अट्रैक्शन हो गया, राग द्वेष आ ही जाएगा। तो जब भी नाम नेम फॉर्म के साथ बात करेंगे तो उनकी क्वालिटीज आ जाएंगी, गुण। तो नाम, रूप और गुण, इन तीनों के होते ही आप माया में फंस जाओगे, राग द्वेष आ ही जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी से डिवाइन लव इज द ओनली एनर्जी विच कैन हील। सो डिवाइन को हम एक्सेस करते हैं हीलिंग में अनकंडीशनल लव के फॉर्म में, एंड दैट एनर्जी यू कैन कॉल दैट रेकी एनर्जी, यू कैन कॉल दैट karmic energy, you can call that KQ energy, you can call that as whatever energy you want, but it is basically the unconditional love of the divine which heals. That is what the topic was today. Spiritual healing can be done only with the divine love, right? So with that, at least the Gyan part is over. Now let us have some more people to share. तो योगेश जी पहले शेयर करना चाह रहे थे, गो हेड, उसके बाद अनिरुद्ध जी। या आई थिंक बहुत अच्छा सेशन था डिवाइन हीलिंग के बारे में। बट एक मेरी क्वेरी है, मतलब मेरी अपनी प्रॉब्लम है। मतलब सारा दिन तो हम सही रहते हैं, बट इंस्टेंट कई बार ऐसा होता है कि मतलब वही हुआ ना, पुराने भी है, पुराना भी हिस्सा पेंडिंग है ना अभी भी। अभी जैसे आपने बताया, संजीव जी ने बताया या अमित जी के बारे में बता रहे थे, क्योंकि पुराना पेंडिंग है। तो कई बार ना बहुत अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन आता है, जो कि हम आई थिंक अपनी जो कंडीशन है वो कंट्रोल नहीं कर पाते और रिएक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल। उसके लिए हम कैसे, मतलब कि उस टाइम हम इंस्टेंट किसी खास मंत्र पे जाएं या क्या करें कि भाई हम समझ जाए कि भाई नहीं, हमें कंट्रोल्ड रहना है, बट नहीं रह पाते हैं कई बार। तो सर उसका आपका साधना ही एकमात्र उसका सोल्यूशन है। बट उस टाइम आपकी साधना जो भी कहाँ आएगा? साधना है, नहीं साधना उस टाइम नहीं चलेगी। आप रेगुलरली साधना करते रहेंगे तो आपका कंट्रोल जो है, रिएक्शन टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप 1 सेकंड में रिएक्ट करने की जगह 30 सेकंड्स में रिएक्ट करेंगे एंड सिचुएशन बेटर हो जाएगी। उस समय आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेडिटेशन रोज सुबह उठ के करेंगे तो आपका रिएक्शन टाइम जो है थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा। करेक्ट? So could be pranayam, could be meditation, could be chanting. All these 3 things will help you. And of course, as I have already, मैंने बहुत बार बोला हुआ है, spiritual healing can help you. So you have to see क्या है। Basically मैं एक एग्जाम्पल बार बार देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ। आप अगर ऐसी बिल्डिंग है जो अंदर से खाली है तो कुछ भी हो जाए आप रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके अंदर अगर टाइम बम भरे पड़े हैं तो लोग ट्रिगर करेंगे और आप फूटते रहोगे। तो आपको अपनी साधना से क्या करना है, अंदर के टाइम बम को डिफ्यूज करना है। बड़ा सिंपल है। तो ये प्रैक्टिस से होगा और ये कई जन्मों से होगा। अब जाग गए हैं, अभी तक सो रहे थे, सुप्त अवस्था में थे, लेकिन अब जाग गए हैं, जागरूक हो गए हैं, तो अब जागृत होकर हमको योग मार्ग पे चलना है। इसको योग मार्ग बोलते हैं। तो योग मार्ग यही है कि हम जागृत हैं। उसके बाद योग मार्ग में बहुत सारे तरीके हैं। मेडिटेशन प्राणायाम की बात कर रहे हैं तो राजयोग की बात कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं तो भक्ति योग की बात कर रहे हैं, और अगर हम वेदांता विजडम की बात कर रहे हैं तो डिवाइन लाइट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। उन सबको कर्मों में लाओगे तो कर्म योग हो गया। यही तो योग के मार्ग हैं, शास्त्रों में यही बताया गया। राइट? तो अपनी साधना पे फोकस करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। धीरे धीरे आपका बॉडी कंट्रोल में आ जाएगा, माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। एंड मेडिटेशन इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर आप वाकई में वननेस में जाना चाह रहे हैं, आई वुड से मेडिटेशन इज ए मस्ट। तो कीप प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन along with your breath work, along with your mantra chanting, and if you want to learn healing, welcome. Right? Yes. Thank you Yogesh ji for sharing that. Let's acknowledge Yogesh ji. Okay, Anirudh ji, coming to you now. Yes. सर 2 पॉइंट हैं। एक तो अभी फॉरगिव के ऊपर बात हो रही थी, तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि फॉरगिव से कैसे दूसरे से को फॉरगिव किया जाए अपने आप को। तो फॉरगिव का जो बेसिक जो है, फॉरगिव का जो प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशन पहले छोड़नी पड़ेगी, तभी फॉरगिव कर पाएंगे। दूसरा है अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट करेंगे तो फॉरगिव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आसान काम नहीं है, मुश्किल है, परंतु हो सकता है कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, अटैचमेंट नहीं करनी। और थर्ड ये है, एक्सेप्ट अदर एज दे आर। अगर हम उनको वैसे एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तो फॉरगिव अपने आप करना चालू कर देंगे। ये तो पहला पॉइंट। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट है, जो अभी एक पॉइंट और है सर, जैसे हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर मतलब कि हमें कहा जाता है एक्सरसाइज करो, फूड कंट्रोल करो, तो बीमारी नहीं होती है।
तो ऐसा मेरा सोचना है कि जो ये हीलिंग है, डिवाइन हीलिंग है, तो इसके लिए भी हमें प्रिकॉशन मेजर लेने चाहिए। उसका बड़ा एग्जांपल है, सुख में सर्वन सब करे, दुख में तो दुख काहे को होए। अगर जब हम खुश हैं तब डिवाइन को याद रखेंगे तो फिर ये हीलिंग की जरूरत कम पड़ेगी। तो हीलिंग तभी होगी जब डिवाइन इन्वोक होगा। हाँ जब जी, आप डिवाइन को रोज याद करेंगे तो आप रोज हीलिंग ही कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो डिवाइन को अगर जितने ज्यादा 24 घंटे याद रखोगे तो वो मैं उसको प्रिकॉशनरी मेजर कह देता हूँ कि फिर वो दुख काहे को होए फिर। तो ये बस इतना सही ही। अंडरस्टैंडिंग अगर आप जानना चाहें तो जितने जैसे आप डिवाइन को याद कर रहे हैं तो आप हील ही कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन के याद करते ही वो डिवाइन एनर्जी आपके थ्रू जाएगी और आप हील होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द हीलिंग प्रोसेस, दिस इज द स्पिरिचुअल प्रोसेस, दिस इज द इवोल्यूशन। यही बताना चाह रहा हूँ। राइट, वेरी गुड अनुज जी। और कोई पॉइंट? यस, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, वेरी गुड पॉइंट। यस विजय जी, गो अहेड। जस्ट पॉइंट, वो योगेश जी जो बात बोल रहे थे उसके ऊपर, कि अगर कोई चीज ट्रिगर करती है ऑफ्टन, तो जब ध्यान में बैठते हैं और थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे और यही जो प्रिंसिपल्स की बात हो रही है इनको लगाएंगे, तो इट विल ऑटोमेटिकली गो अवे इन टाइम, राइट? Absolutely, it will not go away with time. When you do that, it will go. You can take as much time as you want. राइट। अगर आप 2 जन्म बाद अगर करोगे तो 2 जन्म बाद जाएगा। अगर आप 2 दिन में करने चाहो तो 2 दिन में हो जाएगा। अल्टीमेटली यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू फॉरगिव, यू हैव टू एक्सेप्ट, जो अनिरुद्ध जी ने बताया, एंड यू हैव टू इन्वोक द डिवाइन। बी कनेक्टेड विद द डिवाइन विल टेक केयर। इसी को बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डू नॉट ग्रीव, सरेंडर टू मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। मैं नहीं कह रहा, लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं। राइट, so when the ego surrenders to the divine is invoked and the divine will heal. आपके सारे कार्मिक इम्प्रिंट्स 1 सेकंड में चले जाएंगे आपके। आप ये बताइए, अगर आपकी जितनी भी लाइफ में सफरिंग्स और मिजरीज हैं, जितनी भी आई हैं या जितनी आएंगी, अगर भगवान चाहे तो 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? यस। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम का हमको सरेंडर करना ही नहीं आता। वी डोंट नो हाउ टू कनेक्ट विद द डिवाइन। We don't know how to connect with the divine and we don't know how to surrender to the divine. सारी प्रॉब्लम तो हमारे में ही है ना। गॉड तो ऑनलाइन 24 आवर्स है। यू कैन कनेक्ट विद डिवाइन वेन एवर यू वांट। हम ही कनेक्ट नहीं करते हैं। आज पार्टी में जाना है, आज इसमें उसमें जाना है, आज मैं सेशन नहीं कर सकता, आज मेरे को रिकॉर्डिंग देखनी है। ये सब क्या हो रहा है? यू आर द वीआईपी और गॉड इज द वीआईपी। वीआईपी कौन है हम दोनों में? ओके, तो समझ गए सब लोग? सो यू हैव टू कनेक्ट विद द डिवाइन। द मोमेंट यू कनेक्ट विद द डिवाइन, ego will get surrendered and the divine will get invoked and you will be healed. It will happen ऐसे एक चुटकी में। That is the power of spiritual healing. That is the power of divine. That is the power of divine love. So like the very famous dialogue of SRK, don't underestimate the power of spiritual healing. Yes. All right, so with this we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great day, enjoy a great week, and we meet again. Till then, Sir, I have to say one thing. Yes, Vishaka ji, go ahead. Sir, I only have to say that before attending this station, I have zero idea about what divine healing is. But after attending this station, I must say I have some idea. So thank you so much. Thank you, everyone. Very good. Thank you, and you're welcome. Wow. You can leave your number in the chat box, and we will add you in the group in case you are. And then he says that I'm just 24. Good. See. तो विशाखा जी, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। गुंजन जी, आप नोट कर लीजिएगा। जी sir. Right, sir. And you can send it to me later. We will add her in the. You would like to get added in the DHV, Vishaka ji? Okay, she has given her number, तो एक बार नोट कर लेना, ठीक है? Okay, sir. Yes. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great week. Until we meet again next Wednesday. It is always a Wednesday, right? Till then, Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Thank you. Take care. Good night. Good night.